Hello students, today we are going to talk about Augustan Age. न्यू क्लासिकल एज में तीन एजेस आते हैं, सब एजेस। रेस्टोरेशन, ऑगस्टिन और एज ऑफ जॉनसन, जिसे सेंसिबिलिटी एज भी कहते हैं। न्यू क्लासिकल एज spans between 1660 to 1790s. Restoration age spans between 1660s and 1700. Restoration 1700s 1745. Sensibility, that is age of Johnson, 1745 or 1750 and 1790s. Okay, but what is actually new classical age? Before we discuss Augustan age, we should know about what is new classical age. In very brief, in one line, I will say new classical age was the age where writers drew inspiration from the classical writers or the classical antiquities. Okay, because we are not here to talk about new classical age in detail, I am going to leap into Augustan age. But wait, Augustan age is called Augustan age. Why? And Augustan age is called age of satire. But why? पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, अच्छा मैं एक कहानी सुनाता हूं। चार राइटर्स थे, चार लैटिन राइटर्स थे, ओविड, वर्जिल, होरेस, जुवेनल। ये लोग किंग ऑगस्टस के रेन में, मतलब उनके शासन में काम कर रहे थे, लिख रहे थे। ठीक है। सो दीज राइटर्स वर सो inspirational and influential that the writers of the Augustan age were mad at them. Okay, mad. Why were they mad at him? At them? Because new classical age is all about classical antiquity. Okay, they are about Romans and Latin. Okay, so what happened was that they started to imitate those writers, and imitation was so elaborate and so dense that they had to be called upon as Augustan writers. Remember कहानी, किंग ऑगस्टस की कहानी, इसलिए ठीक है, कहानी मैंने जो बताई वो बोल रहा हूं। So why do we call Augustan age writers Augustan age writers? Because they drew inspiration from Horace, Juvenal, Ovid, Virgil. For example, Alexander Pope. If we are talking about Augustan age, we cannot afford to avoid Alexander Pope. He was mad at Horace. He copied Horace. And if you talk about Dryden, we cannot afford to lose Dryden as well. John Dryden was mad at where? Virgil. Okay. So one was mad at Horace and another one was at Virgil. I don't mean to make it very elaborate, so I am just taking two examples. So thus it was called upon as Augustan age, and even today when we talk about the age of the writers between 1700s to 1745, we say they were Augustan age writers. But wait, another question was, why do we call them age of satire? Actually, age of satire was called because satire was very famous at these times, at that time, because of the rise of the publishing house, because of the rise of the novels.
In 1719, if I take some reference to my notes, Robinson Crusoe was a satire and was published in 1719, and the author is Daniel Defoe. Gulliver's Travel 1726, कहानी किसकी? ब्रॉबलिन नैंगन की, लिली पुटियन की, और भी कई जगह की। तो वो पब्लिश हुआ 1726 जॉनथन स्विफ्ट के बारे मेरे द्वारा, लिखा जॉनथन स्विफ्ट ने था। ठीक है। Now, we all know about Modest Proposal by Jonathan Swift and Gulliver's Travel, but how Robinson Crusoe is also a satire, because there is an instance where Robinson Crusoe calls a slave Friday without ever asking about what actually his name is. So this is also a satire, in a way. I mean, I'm not going to leap into this at a very in a very elaborate manner. But this post-colonial or this racist behavior could also be called upon as satire. Because what actually is satire? Before we focus on Pope, before we focus on Dryden and Jonathan Swift or Daniel Defoe, we must look at satire. सटायर कोई डिवाइस नहीं है, लिटरेरी डिवाइस नहीं है। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं अरे सटायर तो लिटरेरी डिवाइस है। नहीं 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 नहीं, सटायर इज नॉट लिटरेरी डिवाइस, इंस्टेड इट इज अ जॉनर। जॉनर क्या होता है? कैटेगरी। तो सटायर है क्या? सटायर इज बेसिकली अ लिटरेरी जॉनर दैट यूजेस लिटरेरी डिवाइसेस लाइक irony, exaggeration, that is hyperbole, and humor in order to criticize, ridicule, or attack at human follies, human vanity, human flaws. If we talk about if we talk about Essay on Man by Alexander Pope, think then thyself, presume not God to scan, proper study of mankind is man. अरे भाई तुम क्या भगवान अपनी तुलना भगवान से करना चाह रहे हो? इसमें क्या सटायर पता चल रहा है कि लोग ग्राउंडेड नहीं है, लोग ग्राउंडेड नहीं है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है अपने नोट्स में, लिखा ही नहीं है। It is satirical because people look up to be God and they forget that they are mortals, they are human beings. Okay. Another example could be John Dryden's poem Absalom and Achitophel. अरे ही सेज, उसकी कविता में एब्सलोम एकिटोफेल में वो एक आदमी को, मतलब उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर एक पॉलिटिकल आदमी को, मतलब एक पब्लिक फिगर को अटैक करने के लिए लिखता है। ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइड, थिन पार्टीशन डू देयर बाउंड्स डिवाइड। ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइड, थिन पार्टीशन डू देयर बाउंड्स डिवाइड। मतलब पागलपन और इंटेलिजेंस, जीनियस होने में एक पतली सी रेखा होती है और उस रेखा को कभी भी पार कर सकते हैं। जो बहुत इंटेलिजेंट है वो पागल है, जो बहुत पागल है वो भाई इंटेलिजेंट है। ठीक है। तो ये तो सब जानते हैं। अरे आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता? अगर देखा जाए, आइंस्टाइन पे नहीं फोकस किया है, ये बता दे रहा हूँ। मेक एग्जाम्पल है, आई एम जस्ट trying to explain this with the help of an example. Okay. So by this we can conclude John Dryden uses a philosophical statement, a universal truth about madness and genius, about being a genius and about being a mad person, to ridicule, to attack,
an enemy of his own. ओके, तो अब मैंने क्या क्या बताया, न्यू क्लासिकल एज क्या है, ऑगस्टन एज क्या है, इनके टाइमिंग्स क्या थे, टाइमलाइन, इनके टाइमलाइन क्या थे, और मैंने ये भी बताया कि पब्लिशिंग हाउसेस आए राइज ऑफ नॉवेल्स में। राइज ऑफ नॉवेल्स में 1719 में आपका रॉबिन्सन क्रूसो आ गया, डैनियल डिफो का। 1726 में आपका गुलिवर्स ट्रैवल आ गया। मॉडेस्ट प्रपोजल भी आया था जोनाथन स्विफ्ट का, कभी आया होगा, आया तो था ही। तो हम लोग ने इतना डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई ये जो सटायर क्यों बोलते हैं, सटायर होता क्या है। सो एज वी हैव डिस्कस एवरीथिंग and covered everything, I hope that you must have enjoyed this lecture. So please care to share, subscribe, comment, like, do whatever you can in order to support me. And till then, goodbye, thank you, Tata.